સોમનાથ મહાદેવ મંદિર નીચે બૌદ્ધ ગુફાઓ. આ સાંભળીને ઘણા મિત્રોને નવાઈ લાગશે કે આવ કેવી રીતે, પરંતુ આ બન્યું છે એ આ સત્ય હકીકત છે અને એ ભારતના પુરાતત્વ વિભાગ દ્વારા એને પ્રમાણિત કરવામાં આવ્યું છે અને એના 32 પાનાનો એક રિપોર્ટ છે, એમાં આ લખેલી વાત છે. અને એ રિપોર્ટ છે એ સોમનાથ મંદિરના જે ટ્રસ્ટીને છે એને મળી ગયો છે, એમની પાસે પણ છે. આઈઆઈટી કાનપુર અને પુરાતત્વ વિભાગના સંયુક્ત ઉપક્રમે આઈઆઈટી ગાંધીનગર અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સૂચનાથી આઈઆઈટી ગાંધીનગર અને આર્કિયોલોજી વિભાગ દ્વારા આનું સંશોધન કરાયું હતું. આપણે હિન્દુ લોકો જે છે એ 12 જ્યોતિર્લિંગ પૈકીના પ્રથમ એવા સોમનાથ મહાદેવનું સ્થળ, એના ભૂગર્ભમાં 3 માળનું એલ આકારનું બાંધકામ હોવાનું સંશોધનમાં બહાર આવ્યું છે. આઈઆઈટી ગાંધીનગર આ અંગેની એને કામગીરી સોંપાઈ હતી અને સોમનાથ ટ્રસ્ટી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દિલ્હી ખાતેના નિવાસસ્થાને યોજાયેલી બેઠકમાં મંદિરના પુરાતત્વનો અભ્યાસ કરવાનું સૂચન વડાપ્રધાન મોદીએ કર્યું હતું. 4 સ્થળોએ જીપીઆર ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું. આઈઆઈટી ગાંધીનગર દ્વારા એની 4 સહયોગી સંસ્થાના આર્કિયોલોજી નિષ્ણાતોની ટીમ સોમનાથ આવી હતી. સોમનાથ અને પ્રભાસ પાટણમાં કુલ 4 સ્થળે આ ટીમે જીપીઆર ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું હતું, જેમાં ગોલોકધામ સોમનાથ મંદિર, વિજયદ્વાર તરીકે ઓળખાતા મેઇન ગેટથી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના સ્ટેચ્યુ આસપાસના સ્થળે તેમજ બૌદ્ધ ગુફાઓનો સમાવેશ થાય છે. જેનો 32 પાનાનો રિપોર્ટ નકશા સાથે સોમનાથ ટ્રસ્ટને સોંપવામાં આવ્યો હતો. તો એ હિરણના કાંઠે પણ એ બાંધકામના ભૂગર્ભમાં પુરાવા મળ્યા છે. આ મુખ્ય વાત એમ કે એ રિપોર્ટ છે એમાં તમને આ જોયું છે અને એ 5 મીટર અને 3 માળને ઊંડાઈ આવેલો છે. જ્યારે સોમનાથમાં અત્યારે યાત્રિકોની સિક્યુરિટી તપાસ થાય છે એ સ્થળે પણ ભૂગર્ભમાં એલ આકારનું બાંધકામ હોવાનું જણાયું છે. વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી આ રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી ગાંધીનગરના નિષ્ણાતોએ આશરે 5 કરોડની કિંમતના મોટા મશીનો સાથે પ્રભાસ પાટણ આવી સોમનાથમાં એક દિવસ રાત્રિ રોકાણ કરી સાઇડ લેઆઉટ પ્લાન તૈયાર કરી સર્વે કરી જે સ્થળોએ 2 મીટરથી 12 મીટર સુધી જીપીઆર ઇન્વેસ્ટિગેશન દ્વારા જમીનની અંદર વાઇબ્રેશન આવે એના પરથી નિષ્ણાત પોતાનો અભિપ્રાય આપે છે અને એના પરથી રિપોર્ટ તૈયાર થાય છે. આ દિવ્ય ભાસ્કર જે ન્યૂઝપેપર છે એની વેબસાઇટમાંથી આપણે આ માહિતી લીધી મિત્રો. અને જે બુદ્ધિસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ નેટવર્ક છે એના રાષ્ટ્રીય પ્રભારી છે ડોક્ટર વિલાસ ખરાત, રાષ્ટ્રીય સંયોજક છે માનની વામન બેસરા. તો એમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીને એક લીગલ નોટિસ પણ આપેલી કે આ મંદિર છે એ તો એ જગ્યા છે એ બૌદ્ધ લોકોની છે, બૌદ્ધ વિરાસત છે, તો એ ખાલી કરવા માટે એક લીગલ નોટિસ આપેલી અને એ લીગલ નોટિસના અનુસંધાને આ જે પ્રેસ નોટ છે ને એ તમારી સામે દેખાય છે અને એ 7 નવેમ્બર 2023ના રોજ લીગલ નોટિસ એને આપી હતી. અને એમાં એનો જે મુખ્ય કહેવાનું હતું ભાઈ કે વડાપ્રધાન છે, વડાપ્રધાન તો છે જ, પણ એની સાથે એ સોમનાથના ટ્રસ્ટી પણ છે. અને જ્યારે હવે એને ખબર પડી ગઈ છે કે આ તો આની નીચે તો બૌદ્ધ વિરાસત છે, તો એનું તો ખરેખર સાર સંભાળ લેવી જોઈએ, એનું સંરક્ષણ થવું જોઈએ અને એની પૂરેપૂરી તપાસ થવી જોઈએ. એટલે એક લીગલ નોટિસ આજે બુદ્ધિસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ નેટવર્ક દ્વારા આપવામાં આવેલ. અને એમાં ઘણી બધી એવી વાતો લખી છે કે ભાઈ વડાપ્રધાન વિદેશમાં જાય ત્યારે બુદ્ધ ભૂમિ છે એમ બોલે છે અને અહીંયા બૌદ્ધ વિરાસત પર બ્રાહ્મણોએ કબજો જમાવ્યો છે, તો એમાં કંઈ કરતા નથી. તો આ તો એમ કે ભાઈ એનું બેવડું ચરિત્ર કહેવાય ને. તો આ
આ લીગલ નોટિસથી એ વડાપ્રધાનનું એમ કે બેવડું ચરિત્ર છે એમ સાબિત થાય છે એવું આમાં લખ્યું છે. એ તમારી સ્ક્રીન સામે છે, જે મિત્રોને વાંચવું હોય પણ એ પણ વાંચી શકે છે. પૂરી આખી જે નોટિસ હતી એ એની વિગત છે આમાં, એમાં આપણે નથી અત્યારે ડિટેલમાં વાંચતા. અને આ જે છે ને એ આર્કિયોલોજી વિભાગનો જે ડ્રાફ્ટ રિપોર્ટ હતો ને એ ડ્રાફ્ટ રિપોર્ટનો જે વામન વિલાસ ખરાતે એની જ્યારે સાયન્સ જર્ની રેશનલ વર્લ્ડ ચેનલ ઉપર જ્યારે આ વિષય ઉપર એ વાત કરતા હતા ત્યારે એનું પ્રથમ પેજ આવી રીતે દેખાડ્યું હતું. કીધું ભાઈ આ રિપોર્ટ હજી જાહેરમાં નથી આવ્યો એટલે પબ્લિશ નથી કરતા, પણ એમ કે અમે ભવિષ્યમાં એ પબ્લિશ કરશું. અને એ આઈઆઈટી ગાંધીનગરનો સમજો ને આર્કિયોલોજી વિભાગ બંનેનો આ એક ડ્રાફ્ટ રિપોર્ટ છે. 32 પાનાનો એ રિપોર્ટ છે. બુદ્ધિસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ જે સંસ્થા છે અને ભારત મુક્તિ મોરચા એના દ્વારા આ માહિતી ગુજરાતના લોકોને મળે, સોમનાથના ખાસ કરીને આજુબાજુના લોકો વધારે ભાગ લઈ શકે એમને મળે એટલા માટે એક પરિષદ નું આયોજન કર્યું હતું. અને એ આયોજન છે એ 25 ફેબ્રુઆરી 2024 રોજ કરવામાં રવિવારે રાખવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમને રોકવા માટે ઘણા બધા મિત્રોએ મહેનત કરેલી, એ વિડીયો અગાઉ તમે મૂક્યા છે. અને આ એમનો જે વિષય છે કે સોમનાથ મંદિર નીચે જે 3 માળની બૌદ્ધ ઇમારત છે, તો આમ છતાં જાણવા મળ્યું છે છતાં હજી કેમ નથી સોંપ્યું. અને એનો એમ એવો પુરાવો છે કે ભાઈ સમ્રાટ અશોકે જે 84,000 વિહાર બનાવ્યા હતા, તો એ બધા વિહારો આવી રીતે બધાને ખતમ કર્યા હશે. અને આ વિરાસત છે એ મૂળ નિવાસી જે લોકો છે આજના ઓબીસી, એસસી, એસટી, કોળી, ઠાકોર સહિત એ બધાને આ વિરાસત કેવી રીતે પાછી મળે એ વિષય ઉપર ચર્ચા કરવા માટે આ બૌદ્ધ ધર્મ પરિષદ રાખવામાં આવી હતી. બૌદ્ધ ધર્મ એ શૂદ્રોનો ધર્મ છે એવું હરિવંશ પુરાણમાં બ્રાહ્મણો દ્વારા લખવામાં આવ્યું છે. એટલે એનાથી નક્કી થાય છે કે વર્તમાન ઓબીસી નો પૂર્વજો બૌદ્ધ ધર્મ હતો. વિચાર કરજો, વર્તમાન ઓબીસી એટલે કોણ? ઓબીસીમાં ગુજરાતમાં સૌથી મોટી કોળી સમાજ આવે છે. એટલે એ અને કોળી સમાજ તો આખા દેશમાં માને જ છે કે ભગવાન બુદ્ધ છે એમના માતા કોળી હતા. એટલે કોળી સમાજ ભગવાન બુદ્ધને એના ઈષ્ટદેવ તરીકે માને છે આખા દેશની અંદર. તો એ બ્રાહ્મણોએ એના જે લખ્યા ગ્રંથો, હરિવંશ પુરાણમાં લખ્યું છે કે બૌદ્ધ ધર્મ છે શૂદ્રોનો ધર્મ છે. એટલે કે ઓબીસી જે શૂદ્રોમાં આવે એમનો ધર્મ છે. એટલે વિચાર કરજો, હવે આખો જેનો વિષય હતો ને જેનો બુદ્ધિસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ નેટવર્ક દ્વારા, તો એનું આ પત્રિકા છે. તો સોમનાથમાં પ્રાચીન બૌદ્ધ વિરાસતો ઉપર મહાદેવ મંદિર કેવી રીતે, આ આપણે સમજવાનું છે. અને મૂળ વિરાસત માલિક, આ જે મૂળ વિરાસત છે એના માલિક છે કોળી છે, ઓબીસી, એસસી, એસટી, એ જાગે એના માટે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અને એ કાર્યક્રમની અંદર અધ્યક્ષ સ્થાન બુદ્ધિસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ નેટવર્કના રાષ્ટ્રીય પ્રભારી પ્રોફેસર વિલાસ ખરાતે લીધું હતું. તો આપણે એ કાર્યક્રમની અંદર વિલાસ ખરાત આવ્યા હતા અને એમને શું બોલ્યા હતા આપણે એ પણ સાંભળવું જરૂરી છે. આપણે એ સાંભળીએ, ડોક્ટર વિલાસ ખરાતને સાંભળીએ આપણે. तो राष्ट्रीय बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, उसको मैं विनती करूंगा कि वो डाइस पर आए और आज अपने कार्यक्रम के अनुसंधान में बात बताए. धन्यवाद. राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विलास राष्ट्र. जय मूल निवासी, जय मूल निवासी. मूल निवासी का नारा है भारत देश हमारा है. निवासी का नारा है भारत देश हमारा है. निवासी का नारा है भारत देश हमारा है. साथियों, जो हमारे लोगों के साथ हो रहा है
ये दर्दनाक है, ये अत्यंत पीड़ादायी है। भारत के संविधान के अनुसार संविधान के दायरे में रहकर संगठन बनाने का, लोगों को इकट्ठा करने का और अपनी बात रखने का अधिकार भारत के संविधान ने हमको दिया है। और फुले शाहू अंबेडकर के आंदोलन के कारण वो संविधान बना हुआ है। तो यहाँ के मनुवादी लोगों ने, खासकर कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कुछ चंद दलालों को आगे किया और हमारे कार्यक्रम का जो स्थान हम फिक्स कर रहे हैं, तुरंत उस हॉल वाले को धमकी दे रहे हैं। वो एक रद्द हो रहा है, दूसरे को जाकर धमकी दे रहे हैं, तीसरे को धमकी दे रहे हैं। मैं केशोद में सवेरे 4 बजे पहुंचा था, तो वहां की जो एक्टिविटी हुई मैंने मेरी आंखों से देखी और सुनी। तो वहां का जो पुलिस प्रशासन था, केशोद का जो मैंने अनुभव से देखा कि वो आरएसएस और बीजेपी के जो दलाल लोग हैं उनको कह रहे हैं आप उनको फोन करो, धमकी दो। वो हमको धमकी दे रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता को। वो हॉल वाला हमारी कार्यकर्ता का रिश्तेदार है, वो कह रहे हैं दुनिया इधर की उधर हो जाए, बाबा साहब का कार्यक्रम मैं दूंगा। थोड़ी देर में उसका ही फोन आया मुझे, डायरेक्ट पुलिस का ही फोन आया है, अब मुझे धमकी मिली है, मैं कार्यक्रम रद्द करता। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम संविधान के दायरे में रहकर लोगों को जगा रहे हैं। हम कार्यक्रम के लिए आए हैं, हम संविधान की रक्षा करने के लिए आए हैं। भाषण करना, कार्यक्रम करना ये मकसद नहीं है। उन लोगों ने सोचा कि पर्दे के पीछे रहकर हॉल वाले को धमकी देंगे तो कार्यक्रम रद्द होगा, तो हम दूसरी जगह बुक कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ वहां के पीआई का कि वो कह रहे हैं कि हॉल के कार्यक्रम के लिए आपको फलाना करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा। हमने कहा हॉल में कार्यक्रम है, मैदान में नहीं है। हम आपको लिखित में दे रहे हैं। क्या कभी आरएसएस और बीजेपी के लोगों को इतना परेशान किया, कभी सुना आप लोगों ने? तो साथियों, योजना बनाकर इस कार्यक्रम को रोकने की साजिश की गई, इसका हम जायज धिक्कार करते हैं। और हम यहां लोकतंत्र के संस्था के सामने आए हैं। जो जिले का हेड होता है, जो सम्राट अशोक के शेर स्तंभ को आदर्श मानकर काम करता है, उनके पास आए कि कम से कम आप तो हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें। अगर लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं की जाएगी तो क्या होगा? अराजकता पैदा होगी, असंतोष पैदा होगा। मुझे आश्चर्य भी इस बात का हो रहा है कि कांग्रेस के दलाल लोग, वो भी शेड्यूल कास्ट के लोग, बीजेपी आरएसएस के शेड्यूल कास्ट के दलाल लोग, ये जा रहे हैं। बसपा के शेड्यूल कास्ट के दलाल लोग क्यों जा रहे हैं? सवाल है। वो तो अपने आप को अम्बेडकरवादी पार्टी मानने वाले लोग हैं। तो हम जो प्रचार कर रहे थे कि सतीश मिश्रा पार्टी को चलाता है, तो ये सबूत है कि हम हमारे समाज की बात को लेकर आ रहे हैं। उनको दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जिन जिन लोगों ने इसका विरोध किया, नाम के साथ उनको गुजरात में नंगा कर दो, ताकि समाज को पता चले ये नालायक लोग हैं। वो जो अलग अलग टाइटल लगाते हैं ना, आज से उनको दलाल टाइटल लगा देना चाहिए, वो नाम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व वाला टाइटल है। गद्दार, उनको तो गद्दार टाइटल देते हैं। जो फुले शाहू अंबेडकर बुद्धा के आंदोलन के खिलाफ जो पैसे लेकर खड़े हुए हैं, उनको आज से हम उनका टाइटल बदल देते, दलाल और गद्दार।
साथियों मुद्दा क्या है? मुद्दा हमें विरोध करने की बजाय नरेंद्र मोदी को विरोध करना चाहिए। क्यों? 2017 में नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अध्यक्ष हैं। इनको ऐसा लगा, जो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने जो थ्योरी प्रचार किया कि इतना बार मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ा, इतना बार तोड़ा, ऐसा तोड़ा, इतना सोना लूटा, ये जो प्रचार किया, तो उनको लगा मोदी जी को कि 2019 में चुनाव जीत रहे हैं, कोई कल्याण तो नहीं कर रहे हैं, अब गुजरात के लोगों के सामने जाना पड़ेगा तो कुछ कल्याण किया बताना तो पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा, जिस थ्योरी को आरएसएस और बीजेपी के लोग प्रचार करके गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया, उस सोमनाथ मंदिर के नीचे क्या है ये ढूंढा जाए, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है और उस ट्रस्ट के ट्रस्टी अध्यक्ष है, उन्होंने ऑर्डर दिया कि मंदिर के नीचे खुदाई किए बगैर जो साइंटिफिक मेथड है जीपीआर सर्वे रडार सिस्टम के द्वारा, इसके नीचे, जमीन के नीचे क्या है, ऐसी 4 जगहों की साइट का सर्वेक्षण किया जाए। गांधीनगर आईआईटी के एक्सपर्ट साइंटिस्ट लोग और आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने 5 करोड़ रुपए लिए। इतना 5 करोड़ रुपए वो सर्वे करने के लिए, और 5 करोड़ रुपए लेकर जो सर्वे किया, 2017 में ट्रस्टी अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को 32 पेज का रिपोर्ट सादर किया। अब रिपोर्ट मोदी जी ने देख लिया, मोदी जी ने एक्सपर्ट लोगों को पूछा, भाई इसमें क्या खंगाल कर मिला है आपको? तो उन्होंने कहा, मोदी जी जो आप ढूंढ रहे हो नहीं मिला है, इसके नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार मिला है। अब मोदी जी जिस भावना से काम करना चाहते थे वो सफल होती हुई दिखाई नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं भले ही देश का प्रधानमंत्री हूं, मगर इस मंदिर का ट्रस्टी अध्यक्ष हूं, तुम चुप हो जाओ, मैं भी चुप रहता हूं। 2017 में ये मैटर दब गया। 2017 में ये मैटर दब गया, 2019 का चुनाव हो गया, और 2000 दिसंबर 2020 में उनके ही शायद करीबी दोस्त ने वो रिपोर्ट 32 पेज के रिपोर्ट को लीक कर दिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुजरात समाचार की खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, देश भर में जितने अखबार है, जागरण, हिंदुस्तान, भास्कर, जितने अखबार है, सारे अखबारों ने हेडिंग में छापा है कि जीपीआर सर्वे किया, सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार मिला है। ये अखबार में खबर छपकर आई है। ब्राह्मणों को हमारा विरोध करने की बजाय नरेंद्र मोदी का विरोध करना चाहिए था, उसके खिलाफ मोर्चा निकालना चाहिए था कि तुमने ऐसा किया, क्यों किया, उसको पूछो। हमने क्या किया? क्या हमने रिपोर्ट बनाया? हमने रिपोर्ट बनाया क्या? साइंस होता है, वो किसी को माफ नहीं करता। तो जो थ्योरी बता रहे थे हिंदू मुसलमान, ये थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई। उस विहार को किसने तोड़ा, किस वजह से तोड़ा, और तोड़ने के बाद वहां मंदिर बनाया, और मंदिर को तोड़कर बाद में मस्जिद बनाया। ये स्थिति मैं आपको जानकारी के तौर पर बता रहा हूं। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 32 पेजेस का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। ब्राह्मण लोगों ने इसका विरोध किया है, खास करके बीजेपी के लोगों ने। तो इस रिपोर्ट को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को सार्वजनिक करना चाहिए, एएसआई को इसको पब्लिश करना चाहिए, वो पब्लिश नहीं कर रहे हैं। वो जो 32 पेजेस का रिपोर्ट है, हम लोग इसी माह में उसको हिंदी में और गुजराती में, अंग्रेजी में हम प्रसिद्ध करेंगे, और गुजरात के गांव-गांव में वो 32 पेजेस का रिपोर्ट पहुंचाएंगे। हम जागृत करना चाह रहे, चर्चा करके, चर्चा से डर लग रहा है उनको। उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? उस रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है वो आश्चर्यजनक है।
उस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि 4 जगहों पर हमने उत्खनन किया है, वहां सर्वे किया है और वहां हमें प्राचीन अवशेष की जानकारी मिली है। और साइट क्रमांक 4 पर हमें जगह जगह पर बिखरे अवशेषों के सिग्नल मिले, जहां पर प्राचीन बौद्ध अवशेष और रचनाएं के प्रमाण मिलते हैं। इसके अंदर उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यहां बुद्ध स्तूप है। मैं आपको उस रिपोर्ट के अंदर जो जानकारी है उसका जो सार है मैं आपको बता रहा हूं। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि गुफा का प्रतीक है और दोनों बाजुओं में अवशेष मिलते हैं, यहां पर भी अवशेष मिलता है और नीचे 4 से 5 मीटर की गहराई पर आयताकृति संरचना है, जिसके दोनों बाजुओं में गुफाओं को जोड़ने वाले 2 छोर है। यह संरचना वास्तव में एक गुफा से दूसरी गुफा तक ले जाने वाला पैदल रास्ता है। इस स्थल पर अनेक परिवर्तित प्रकाश किरण जांच के दौरान मिले हैं, जिससे हम यह अनुमान निकाल सकते हैं कि 2 गुफाओं को जोड़ने वाले रास्ते की बजाय यह एक सुरंग भी हो सकती है। इस संपूर्ण निरीक्षण को साइट नंबर 4 में हमने दिखाया है और साइट नंबर 4 का संपूर्ण लेआउट विश्लेषण के साथ हमने इस रिपोर्ट में जोड़ा है। हम कह रहे हैं, हमारा आरोप है, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो पुलिस प्रशासन को विरोध करने वाले लोगों की बात सुननी चाहिए और कहना चाहिए कि आप भी उनके खिलाफ दूसरा कार्यक्रम करो, ओपनली चर्चा करो और उनकी बातों का खंडन करो। डेमोक्रेसी में ऐसा तो है, किसी का गला नहीं दबाया जा सकता। या फिर ऐसा करो, आप इनके खिलाफ आपत्ति जताओ और इसका जो मेन आयोजक है मैं हूं, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। अगर आज मेरे खिलाफ वो ब्राह्मणों के कहने पर मेरे खिलाफ अगर एफआईआर होता तो मैं गुजरात में हर जिले में मिठाई बांटता। क्यों? हमको केस करना ही है। चलो केस बन गया, अब लेकर जाएंगे, अब सबूत दिखाना होगा, नहीं तो श्राद्ध करना होगा। हम गलत का है, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। तो साथियों, उस रिपोर्ट में यह कहा है कि सोमनाथ मंदिर के आसपास के प्रभाग क्षेत्र में जमीन के नीचे क्या अवशेष दबे हुए हैं, यह जानने के लिए भविष्य में उत्खनन करने के लिए हमने जीपीआर सर्वे किया और 4 जगहों पर हमने इसका ढूंढा। हमें अंदर एक दीवार का अवशेष रेखा मिली है और अन्य पुरातत्वीय संरचना भी मिली है। यह सभी अवशेष हमें साइट नंबर 1, 2 के अंदर मिली है और आगे उन्होंने लिखा है साइट नंबर 3 के अंदर भी बहुत अवशेष मिले। आगे उन्होंने कहा संरचना के 2 गुफाओं के मुंह को जोड़ती है, इसलिए यह संरचना एक रास्ता या सुरंग हो सकती है। 2 गुफाओं को जोड़ती है। इसके साथ साइट क्रमांक 4 पर हमें जमीन के नीचे कुछ भिन्न भिन्न बिखरे वस्तुओं के परिवर्तित किरण जांच में मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की आकृतियां, पवित्र अवशेष का मतलब होता है रिलिक कास्केट, बुद्धा के, इसके नीचे क्या है, शरीर धातु है, अस्थि कलश है और यहाँ पत्थर के टुकड़े भी है जो पुरातत्वीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ जगहों पर अत्यंत तेज प्रकाश किरण मिले, जिससे वहां पर जमीन के नीचे धातु की वस्तु है। इसके साथ जीपीआर डेटा में हमें इन 4 स्थानों पर जमीन की संरचना एक जैसी दिखाई दी, कहीं पर जमीनी संरचना में बदलाव नहीं मिला। इसका अर्थ यह है कि इन 4 स्थानों पर स्ट्रक्चरल निर्माण किया, एक ही मिट्टी का इस्तेमाल किया है।
इस जांच के जो जीपीआर सिग्नल मिले, इससे स्पष्ट होता है कि सोमनाथ मंदिर और इसके आसपास के जांच क्षेत्र में जमीन के नीचे अनेक पुरातत्वीय अवशेष मौजूद है और जीपीआर डेटा हमें मिले सिग्नल के आधार पर हमने यह संशोधन किया है। लेकिन ऊपर बताए गए निष्कर्ष की पुष्टि के लिए पुरातत्वीय उत्खनन कर जमीन के नीचे अंदर कौन सी वस्तुएं और कौन से पुरातत्विक अवशेष है ये देखना पड़ेगा। ये रिपोर्ट का सारांश है। अखबार वालों ने एक कॉलम की खबर छापी, अखबार वालों को रिपोर्ट दिया गया, पब्लिकली रिपोर्ट नहीं की। મિત્રો, આ બધી વાત પ્રોફેસર ડોક્ટર વિલાસ કરાતની અને આ વાત છે એ ગુજરાતના તમામ લોકોએ ધ્યાનથી સાંભળવી જોઈએ, સમજવી જોઈએ કે આપણી મૂળ વિરાસત છે એને સાચવવાની જવાબદારી આપણી છે. જે મનુવાદીઓ છે, બ્રાહ્મણવાદીઓ તો એને નહીં સાચવે, એ તો ખતમ કરવા માટે કામ કરે છે. તો આપણી જવાબદારી છે એમ સમજી અને ભવિષ્યમાં જ્યાં પણ આવા જાગૃતિના કાર્યક્રમ થાય ત્યાં દરેક મિત્રોએ સહયોગ આપો. અને મિત્રો, આપણી આ જે ચેનલ છે ઝલકારી ટીવી, અમને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને એના ઉપર આપણા ઓબીસી એસસી એસટી સમાજના સર્વાંગી વિકાસ થાય એવી વિચારધારાવાળા વિડીયો એ ચેનલમાં છે, એ આપ જોજો અને આપણા સમાજને સામાજિક, આર્થિક, શૈક્ષણિક, રાજકીય અને રીતે આગળ વધે એના માટે આપણે સૌ સાથે મળીને પ્રયત્ન કરીએ. આપણા કોળી, ઓબીસી, એસસી એસટી સમાજમાં એકતા અને ભાઈચારો થાય એવું નિર્માણ કરીએ. આપણી જે મૂળ વિરાસત છે, બૌદ્ધ વિરાસત છે અને આપણે બૌદ્ધ સમાજ સંસ્કૃતિના આપણા પૂર્વજો જીવતા હતા અને બૌદ્ધ વિરાસત કે બૌદ્ધ સંસ્કૃતિમાં, સમન સંસ્કૃતિમાં જાતિવાદ, વર્ણ વ્યવસ્થા, જાતિ વ્યવસ્થાને કોઈ સ્થાન નથી. બધા માનવી એક સમાન છે. તો આપણે સૌ ઓબીસી એસસી એસટી સમાજમાં, કોળી સમાજમાં એકતા અને ભાઈચારો લાવીએ અને બધા સાથે મળી આપણી બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવીએ એવી આપ સૌને અપીલ કરું છું. કાર્યક્રમ આપણે પૂરો કરીએ છીએ. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય, જય સંવિધાન.